बेसिकली आज हमारी सामान्य सभा की बजट की मीटिंग थी। बजट के लिए मीटिंग था जो कि 24 तारीख को थी। वो किन्हीं कारणों से मुलतवी रखा गया था और आज उसकी मीटिंग था। तो सभ्यों की एग्जैक्ट संख्या आप हाजिरी पत्रक से आपको जानकारी मिल जाएगा। तो मीटिंग हुआ अभी शांतिपूर्वक अच्छे से। तो सर आपने जो परिपत्र किया था वो जो सभ्य हुआ वो क्या परिपत्र है? नहीं, परिपत्र तो ऐसा है कि जो पंचायत का अधिनियम है और जो रूल्स हैं उसमें सभ्य ही आ सकते हैं ना। कोई भी मान लीजिए आप पार्लियामेंट हो चाहे अपनी स्टेट लेजिस्लेचर हो विधानसभा हो, उसमें ऐसा नहीं होता कि सभ्यों की जगह पे कोई और बैठता है। तो वैसा ही सेम जोगवाई जिला पंचायत के लिए या फिर इवन ग्राम पंचायत तक यही जोगवाई होती है कि ऐसा कोई उनके वती नहीं बैठेगा। तो थोड़ा ये मे भी शायद यहाँ पे कुछ प्रथा चलती होगी। तो हमने पिछले 1-1.5 साल से प्रयास कर रहे थे, 1.25 साल से, कि जो मेंबर है वहीं बैठे, क्योंकि सरकार का जो हेतु है कि महिलाओं का उत्थान हो और महिलाओं का सशक्तिकरण हो, अगर वो आएंगे ही नहीं तो उनका फिर होगा कैसे, मतलब। तो उसके ध्यान में रखते हुए और जो रूल्स हैं, तो हमने कुछ ऐसा नहीं है कि नया किया है। रूल्स के हिसाब से जो रूल है उन्हीं को रिपीट या परिपत्र में किया है। सर ऐसी कोई कचेरी है और जो चेयरमैन की कचेरी होती है वहाँ उसके जो सभ्य है जो चेयरमैन है उसके अलावा दूसरा कोई बैठता है, इसी पे फरियाद आती है? नहीं, फरियाद आती है तो हमने सभी को इसीलिए मार्गदर्शन दिया है कि जो मेंबर्स हैं वो जो चेयरमैन है वो खुद ही अपनी सीट पे बैठे। बाकी उससे क्या है कि जो एक संस्थागत व्यवस्था है सरकार ने किया हुआ है और जो कायदा में व्यवस्था है वो व्यवस्था के अनुरूप ही कार्यवाही होनी चाहिए, नहीं तो फिर इसका नुकसान संस्था को भी होता है और जो पद की गरिमा है उसको भी ठेस पहुंचती है। तो इसके लिए हमने बड़ा विनम्रता पूर्वक पिछले 3-4 सामान्य सभा से सभी को हम ये बात का मैसेज देते हैं और लिखित में भी सभी को जो कायदा की जोगवाई है उसका जान भी किया हुआ। बजट बैठक मध्ये શું ચર્ચાઓ થઈ, क्या મુદ્દાઓ ગઈ 24 માર્ચ ની અમારી સામાન્ય સભા અને બજેટની સભા હતી। કોઈ કારણોસર અમે મુલતવી રાખેલી। આજે જે બેઠક મળી એમાં અમારા 13 સભ્ય હાજર રહ્યા અને 8 જણાએ પહેલેથી જ રજા મંજૂર કરાવેલી, કોઈને દવાખાનાનું કે અન્ય કોઈ કામો હતા। પણ આજે અમારી સામાન્ય સભામાં બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું અને બહુ સારા માહોલમાં બજેટ રજૂ થયું અને જે સભ્યશ્રીના મુદ્દાઓ હતા એ જે તે શાખા અધિકારીઓને રજૂઆતો કરવામાં આવી અને એને યોગ્ય જવાબ મળ્યો છે અને યોગ્ય નિરાકરણ થયું છે। એટલે આજની જે સભા છે એ સામાન્ય રીતે સારા માહોલમાં થઈ શકી છે। બજેટનો નિર્ણય તો શું નિર્ણય છે? બજેટ મંજૂર થયું ના મંજૂર? બજેટ સંપૂર્ણ મંજૂર થઈ ગયું છે અને એમાં કોઈનો વાંધો કે વિવાદ હતો નહીં, એટલે બજેટ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે। હરેશભાઈ, બીજી એવી વાત આવે છે કે ભાજપના હોદ્દેદારો જે સભ્યો છે તેમાં વિવાદ હતો, અમુક સભ્યો ના પાડતા હતા, અમુક હા પાડતા હતા, આ શું વાત છે? એવું હજી મારા ધ્યાન પર આવ્યું નથી, તો કદાચ બારોબારથી આપને વાત મળી હશે તો હું અવશ્ય પાર્ટીનું ધ્યાન દોરીશ અને હું એમને પૂછીશ કે તમે કયા કારણોસર સભામાં હાજર નથી રહ્યા, બજેટ સત્રમાં કેવી રીતે હાજર નથી રહ્યા અને એનો ખુલાસો માંગી જવાબ માંગીશ અને હું એવું હશે તો હું પાર્ટીનું ધ્યાન દોરીશ।